All right, let's start this. Okay, कुछ टाइम What लिमिट is है क्या? the टाइम लिमिट है क्या uh, कुछ? ideally 20-30 minutes is what I'm keeping. I think that should देखो be enough. ऐसे आई हैव थ्री क्वेश्चंस, ठीक है, विच वी विल गो फ्रॉम योर जर्नी, कहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग एंड व्हाट इंडस्ट्री करंटली, और इसका फ्यूचर क्या देखते हो आप आगे, मतलब कहाँ तक सोच रहे हो करंटली, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट Let's करेंगे go. आपके बैकग्राउंड से सबसे पहले, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। Already. ठीक है भाई. My name is Karma. I'm 23 years old. I'm from the north, right? Where I'm currently based out of Bangalore. I started out as an electronics engineer. उसके बाद I got into content writing, then content creation, then video production. Uh, right now I'm running a full video production agency. उसके अलावा I'm doing personal branding for people and so on and so forth. ओके, अब जब आपने अपना ये स्टार्ट किया ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइक स्कूल टाइम से या फिर कॉलेज से स्टार्ट किया था? Yeah. बेसिकली लाइक यू स्टार्टेड विद कंटेंट राइटिंग एज फार एज आई नो, कौन से ईयर से Yeah. स्टार्ट किया था आपने? College. So I used to write in school. थोड़ा बहुत like my English is pretty okay, हम्म, as you know. ठीक है, right? So it's pretty decent. But school से I was writing. I was doing well in essays and competitions and stuff. But yeah, when I got to my first year of engineering, I realized that I didn't want to do engineering. So my second year, I started reaching out for internships. हम्म, हम्म, हम्म। तो स्कूल में मतलब वो राइटिंग जो आपने जब स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड राइटिंग विद द कंटेंट विद नो आइडियाज कि हाउ इट वर्क्स, बट यू जस्ट स्टार्टेड रैंडमली throwing out. Yeah, I think Indian education system, they don't teach you how to write. Mhm, They teach you how to like mug up and vomit in specifically in like an answers. If you look at how thesis is done, बाहर जाके तुम कोई उठाओ कोई कुछ you read books, right? The writing is very different. The writing is very concise. The writing is very much to the point where it delivers the value that it wants to deliver you, and also like it doesn't words मुश्किल नहीं होने चाहिए. हाँ, Like it should just be as easy as possible, and like you should understand it. Obviously, bro, you know your vocabulary is crazy. You know a lot of words, great. But if you cannot interact and communicate properly, then that's shit, right? Doesn't matter. so right now you are living in Bangalore and doing full time for the audience, obviously बताने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जितना भी आपने नहीं बताया, मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐड कर रहा हूँ ताकि मिस आउट ना हो जाए फॉर द पीपल हु डोंट Yeah. नो, बेसिकली, है ना। तो वन क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, ऐसी मतलब अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक आप उसको लाइक, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद, ओके, या फिर वो अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ कि उसको कैसे सॉल्व करें, एनी लाइक हैबिट चैलेंज या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रगल जो या तो कर चुके हो ऐसा कुछ, या फिर अभी तक जस्ट Hmm. फिगर आउट नहीं हुआ है। Hmm. 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 Uh, how do I put this? Good question. I think what I'm still struggling with is, yeah, I think what it's what everyone is struggling with is हम्म, being consistent. But I think I've conquered that to a lot of level, uh, where I don't struggle with it that much. But obviously, there are days where you don't feel like doing something. Da, da, da. But consistency is what I used to struggle with, हम्म, and to even like 3-4 महीने पहले तक I was still struggling with like how do I do go about it. But 3-4 months ago, something snapped in me, something shifted. I was like, fuck it, I'm going all in. I left my job, got full time into content creation, video production, and so here we are right now. and you still haven't figured it out on a certain level. I don't think you can ever, bro. I think consistency is something where I think humans are meant to work in sprints. Okay, I हम्म, think a lot of people talk about this. I where like tum, I go in like 1 month of like crazy work where sometimes I sleep 5-6 hours. Okay, and then I sort of like have that downtime where like for a week I'm doing nothing हम्म, or I'm just enjoying myself or I'm just reading a book or a podcast or I'm just like thinking to myself. So I work like that. I like 8 days I'll have lagatar shoot. Right. And then 1, 2, 3 days I'll just like I'm not doing anything. I'll just handle some post production with like थोड़ा coordinate कर लूंगा but उससे ज़्यादा मैं दिमाग नहीं खपा रहा हूँ उसमें. That's how I work and that's what works for me. ठीक है. Obviously in some areas of your life you need that daily consistent action where obviously workout तुम्हें करना है. But for other areas, work areas, right? Like, I think working in sprints works for me. I that's why I left my job. I could not carry on with the 9 to 5. Right? हम्म, Every day travel, go there, work, come back.
हम्म, Some days like ठीक है अभी like there is not much, so I'm just sitting there. ठीक है तो before I left my job, I was the CMO at a smart lighting startup. It was an e-commerce brand, so I was doing it for them, and so that's what I was like कि maybe I don't want to do this in a way कि मैं रोज यही कर रहा हूँ, and there's nothing like that. So I work in sprints now. I make content, I shoot stuff, I direct stuff, I edit stuff, and it's all works in sprints. And I get a lot of time to myself, which is what I've always wanted. And I get to spend time with my loved ones, with my cats that I have. And that's pretty chill. हम्म। So that one thing that like your job that like you left, that made you gave you more time to work on yourself Mm, and with the people you are obviously. So mm. when you got the like more freedom as a opportunity जो आपने उसमें देखा ना कि with the more like more time मिला, अब आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, अब उसको कहाँ पे spend करना है, किधर करना है, that's up to you, but with the more time what do you think the best thing you can do with the more time, extra time? With the more time that you get. So here's what I did. Right when I left my job, sometime I used to figure things out for myself. कि अच्छा ठीक है, what is the next move? क्योंकि job तो नहीं करनी है. That was cemented in a way. But okay, what is the next move? I took that time to introspect, introspect basically, and self realize and a lot of things. Okay, where do I want to go from here? What do I want to do? So Mm-hmm. that's what I did. And when you get the freedom, so here's what's the crazy part is, right? However time I was spending, however mental energy I was spending in that job, and I'm not saying jobs are bad, you don't take this out of context, but for me, जितना मैं mental energy spend कर रहा था, that I just realized कि this is not me. Where and you'll be surprised, like I've made much more money with just working fewer days and with more intensity and just in way better projects. And my growth has been like crazy doing this thing. Right. And I've connected to a lot more people and I've built a lot more connections and I have a huge community now of over 100 plus members who are also building things, who are also on the pursuit of building things. And that's how I see it, because the more time you get, I feel don't waste it. I Mm-hmm. was again I that because I was like, okay, I'll just like chill out. But what I did was I even when I procrastinated with something else. I was just absent. In my head, I was not thinking about anything. Where again with the meditative practices, where अगर मैं procrastinate भी कर रहा हूँ, then I'm just sitting at my desk, looking out or just looking at my wall. I'm not giving myself any external input, which again then distracts me, and then there's a whole track like that. So that's what like procrastination, but productive procrastination is what I call it. Mm-hmm. अभी ये जो आपने बात बोली ना कि like you never felt yourself in the job, and I hope कि दूसरे लोगों को भी लगता है कि they are just in like वो कर रहे हैं मजबूरी में of course, Yeah. so what's stopping them and what didn't stop you from quitting that? Okay. So for the longest time, it was a sense of security, like why I didn't quit earlier. I'm like, bro, crazy. Money is coming in, work is going out. I have a good secure thing. हर महीने पैसे आ जाते हैं, कोई tension नहीं है. And I just have to go there, sit and all that. But what I realized was the kind of person I am, where I want new. I need that new stimulus every now and then, right? कि मुझे नया project चाहिए, कुछ करते रहना है. So and I've been putting things off, the personal branding thing. I wanted to do that. I wanted to make content for a long time, and I was putting it off. Yeah, I'll job kar raha. So I was like, fuck it, I'll just leave my job. I have no excuses now. Uh, I'll just focus on this. I'll focus on this. I'll focus. I'll keep taking up the other projects, the videography projects that I have. वो मैं करने लगा. And what I think for most people, what is stopping them is complacency. ठीक है, again, people might get offended by this, but complacency is one thing कि you're just comfortable somewhere. And again, there's nothing wrong with that. If you're good with it, great. I was not. Mm-hmm. ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. And I like to I think I'm the kind of person where I want to keep pushing myself, where it's like कि I don't want to settle, where I want to keep improving, right? And I for sure realize that a job isn't the right place for me, because for my goals where I want to be, that was not the right path, right? And again, people might have different paths and different goals, and for them, job might be suitable, but for me personally, not the right path. And again, sense of security है. That's why I think most people don't, if they want to. That is, अगर Mm-hmm. नहीं करना चाहते, they don't even हाँ there, because because I like.
Exactly. I like to control my own routine. I like to control my own time. I like to control how I make my money. So like that's the thing with me. मुझे I want to be in control of everything in my life, whether it be my level of fitness, whether it be my level of mental health, my level of everything. I need that control, and that's why it helped me, and that's why I did it. अगर लाइक अभी जो आपने बात बोली ना like, कि वो जॉब सूटेबल नहीं होती, हर किसी को करना कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते, बट एक और चीज़ इससे आती है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ जॉब की बात नहीं करूँ, फॉर एवर लाइक टीन्स है, यंग पीपल है, जो भी है अभी फिलहाल, दोज आर क्यूरियस पीपल, उनको चुल मचती रहती है हर टाइम कुछ ना कुछ करने की। बट लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स, जो यंग ब्लड होता है उसका क्यूरोसिटी किल करते ही कि नहीं, क्या लगता है? Hmm. लाइक फॉर मी आई थिंक दे कीप अ बैरियर, एक Hmm. वो लाइक द वही होती है ना कि पतली लाइन, द थिन लाइन दैट वी हैव टू क्रॉस एंड टेक अ स्टेप, न्यू स्टेप, स्टार्ट ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड डोर। तो फॉर मी Hmm. आई थिंक दे कीप अ बैरियर इन बिटवीन, यहाँ जाओगे गलत है, दे थिंक लाइक दैट कि यहाँ से Hmm. बार बार जाओ और डोंट स्टेप आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल फेल। I mean, that's a societal thing. I think I agree with that. That is a societal thing where it's like, because I was reading something very interesting very recently. The jobs जो अभी है that was created because इंडस्ट्रियल एज आया, ठीक है, उससे पहले कुछ और जॉब्स थी, अभी इंडस्ट्रियल एज आया है, अभी डिजिटल एज आएगा, तो कुछ और जॉब्स बनेंगे, एंड देन यू हैव टू कीप अपडेटिंग विद द टाइम, एंड लाइक नो जॉब इज अगेन छोटा बड़ा, राइट, व्हाटएवर, बट देखते रहना है कि व्हाट इज कमिंग अप न्यू, एंड दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू बी की because of the internet and the stuff that we have right now, the power that this thing has, you can broadcast yourself and basically get your ideas out into the world, and that has never been possible इससे पहले, जब से इंटरनेट आया तब से, उससे पहले ऑफ तो नहीं कोर्स। पॉसिबल था, चिट्ठी भेजो वहां पर नुक्कड़ नाटक करो तब जाके कुछ चीजें होती हैं, राइट, बट अभी है, एंड आई वुड रियली लाइक टू लेवरेज दिस थिंग बिकॉज लेवरेज इज एवरीथिंग इज व्हाट आई फील। कैन यू एलैबोरेट द लेवरेज फॉर सम पीपल, बिकॉज वो ढूंढने पे भी समझ नहीं आता। लेवरेज इज ऐसा है कि मीनिंग समझ लेंगे, बट दे विल नेवर गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो फोन अभी जैसे आपने दिखाया कि इट हैज़ द अल्टीमेट पोटेंशियल किसी से भी कनेक्ट करने के लिए, पीपल वोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट नो हाउ टू स्टिल यूज इट, टू बी ऑनेस्ट। वो उनको। व्हाट आई मीन बाय लेवरेज इज ब्रो कि एक किताब है ब्रो, ठीक है, द अनफेयर एडवांटेज करके, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, but basically what it says is कि everyone has that special advantage, right? For me, what I later realized was it is very easy to speak, to be on camera. That is my unfair advantage, and that's why I like, अगर मेरा मे बी कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा, राइट, विच इट इज बाय द वे, अच्छा है बट अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बट माय वे ऑफ प्रेजेंटिंग माय वॉइस, माय टोनालिटी, दैट कैन कैरी यू, ठीक है, आई कैन डिलीवर अ ग्रेट स्पीच when I want to, I can give a good performance. That's my unfair advantage. That is the sort of, bro, जब मैं बोलता हूँ लोग सुनते हैं, that's what I realized. That's a leverage that I have. Again, that was yeah, बनाया है मैंने in a lot of ways, and sort of like the voice was given to me. But leverage, if I come to it, is you have to build your own leverages, right? Where I mean ki in a very small sense, it can be the capital that you have that you can invest. Okay. Even to the sense of the amount of followers that you have, that is also leverage. The amount of followers that will do what you say, that is leverage, right? Leverage over other people. Capital है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास followers हैं that are very connected with you. Both of this are a type of leverage, and um, I think leverage is what works because even when you go and meet someone, if you have the higher leverage, then you have a better chance of getting things your way. ठीक है. Simple deal is sometimes we sign bad deals, right? Where we are in a mindset of scarcity कि भाई पता नहीं ये client चलेगा मिलेगा कि नहीं मुझे इस client की जरूरत है तो you take up a bad deal and then you get fucked royally and because you did not have leverage would have been मैंने bro 10 projects already कर रखे हैं भयंकर लोगों के साथ ठीक है and I am collaborating with you, I have the bigger thing in this, you will be helped way more by collaborating with me, ठीक है, so that's the leverage that I hold. Or when you're starting out, you have no leverage. You're starting from zero unless you already have things. नाइस। Leverages. आई थिंक दैट क्लियर्स समवन्स क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है बहुत है ना, अगर अपन देखें ना, लाइक अभी 2024 चल रहा है, यू आर 2001 बॉर्न, राइट? हाँ।
तो अगर मैं एक 10 साल का गैप डिफरेंस लूँ आपके लाइफ में करंटली 2014 से लेके 2024 तक, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस फील किया आपने पर्सनली? पर्सनली, मेरी पर्सनालिटी में ब्रो, I've just gone. I was a talkative kid as when I was growing up, but I was also kind of shy. Okay, well, I was not that open, right? I had not put myself out there a lot. So the biggest change would be that I'm just very social now, and that has helped a lot. That is the biggest change. Otherwise, I would be like, "नहीं मुझे घर पे रहना है," and all that. Now I don't shy away from a social situation. I'm there. I'm in. I'm killing it. And other than that, what else? What else has changed? I think I have found a lot of things that I'm good at. ठीक है, relatively good at 14 से लेके अभी तक, ले ठीक है, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, and that way I can never go broke because I have these skills, I have this knowledge, and wherever you leave me with no money, because when I left my job I gave everything away, whatever savings I have, I'll start from scratch, and again I'm at a good place right now. So that's what I realized, ki with whatever skills and knowledge that I have, I can build things again. I can keep building things, and a sort of confidence that gives you is also what has changed. So I'm very much more confident in my abilities as a person when we're talking about like earning money. That's what. Yeah, I'm way more confident now, and confidence is everything. हम्म। तो अभी जैसे अभी तो राइट नाउ यू आर अर्निंग मनी एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत चल रही है, बट 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक ऐसा होता है ना, लोग जब पैसे नहीं कमाना आता तो दे थिंक इट्स वेरी हार्ड। सबसे पहली तो चीज़, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है वगैरह। एंड ऑल्सो दे थिंक कि मनी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है? जैसे अभी राइट नाउ व्हाट द पर्सपेक्टिव यू हैव कि इजी, इफ यू हैव अ स्किल यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन मेक इट इजीली, ठीक है? मतलब अगर यू हैव द सॉफ्ट स्किल्स काइंड ऑफ थिंग्स। बट जब Hmm. आपके पास नहीं थी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह वगैरह, व्हाट यू थिंक अबाउट मनी, क्या सोचते थे? Bro, then though, so here's what the perspective that I had on money, if I have to like go back 10 years, is I did not know anything about it. Like 14 pe, I was just I did not know jack shit about the world. मुझे कुछ समझ नहीं आता था, like मुझे पता भी नहीं था अच्छा कॉलेज में क्या करना है, कॉलेज क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है. At 14 though, I had no sense of money, but yeah, I realized that money was important. Where I come from a pretty you can say a pretty middle class background, right? And where we started from scratch. My dad started from scratch. He built his own thing. He worked under someone, then he built his own thing, and then it worked out for him, right? So I saw all that happening right in front of my eyes, and I was like, I look up to that. I respect that. And at 14, though, I don't even remember, bro. Like I I think my mentality was, okay, bro, let's live, let's fuck around, find out type of mentality. चल रहा है जैसे चलने दो, चल रहा है, हो चल जाएगा। रहा है. I was a pretty like I can tell you कि at during my second year is of college is when I was like, okay, let's have to lock in now. First year तक भी I was like, देखा जाएगा. अभी तो कॉलेज में आया हूँ, मस्ती करूँगा। Exactly. नाइस। अभी ना अगर अभी जैसे सबको कंटेंट बनाना है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी कंटेंट क्रिएटर बिकॉज उसको जल्दी मनी दिख रहा है सबको। दे थिंक कि पैसा बहुत जल्दी आ रहा है, दैट्स से एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथ, मेहनत नहीं है, वीडियो डालनी है, कंटेंट बनाना है वगैरह वगैरह। तो जो भी स्टार्ट कर रहा है ना, समवन वांट्स टू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, या फिर लाइक जो भी बना रहा है, आपको क्या लग रहा है किस किस वे में जा रहे हैं वो लोग? वेयर इज द कंटेंट क्रिएशन हेडिंग टुवर्ड्स? Bro, I think so. This was a study. I think where I was reading, I forgot, but the creator economy will double in its market share. Abhi 250 billion pe, it'll go to around 450 billion almost. But so there is the market. Then I see the appeal of people as well, right? Where people want to make content and get it out because people have seen other people's lives changing overnight. कि ठीक है एक वीडियो हिट गया, ठीक है ब्रो अब ये बड़ा हो गया, ठीक है, and that's all it takes, and it sort of is in a way a lottery ticket where it works out like that. But again, for longevity, something else is required for because when I entered the game about a month ago, because again I was doing this for 3 years for other people, right? When I entered the game a month ago, I just had a chat with myself. I was like, bro, I'm in this for the long game. I am. अगर मैं घुस गया हूँ, then I'm not leaving, and I'm trumping everything else and everyone else. Right? So that's how I approach it. कि अब मैं बना रहा हूँ तो बनाऊंगा और मैं अच्छे से बनाऊंगा, and I will live for longevity, authority, and I don't.
Like short form content is where I've started because also what I've excelled in, but I will go to long form as well. हम्म. मैं long form भी बनाऊंगा, and that's where your authority comes in, and I don't want to be that. I don't think anyone wants to be कि like bro मेरे को एक मेरा वीडियो हिट कर गया, मुझे सब मिल गया, and then now I'm like struggling कि क्या करना है. Right, I will make content that I feel like. I हम्म. will make content that I want to share. ठीक है, I don't care कि वायरल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि चला जाएगा. I'm not really concerned about that. If it's authentic enough, if people relate enough, if you are true to yourself, it will go viral, if you want to call it viral, but it will reach the right people. हम्म. एंड Yeah, ये that's ऐसा what I होता है believe. अभी कि यू आर डूइंग इट फॉर 3 इयर्स फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए. एंड समवन अगर किसी को आज स्टार्ट करना हो तो व्हाट द थिंग्स दे शुड बी कीपिंग इन माइंड, क्योंकि आप अभी जैसे यू सेड कि यू आर लुकिंग फॉर लॉन्जेटिविटी, यू वांट प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम कि रेलेवेंट भी रहे, आगे तक भी चले. इफ़ यू आर सेइंग समथिंग राइट ना, तो 10 साल बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि मैंने ये क्या बोल दिया वगैरह वगैरह. Mm. कि अभी जैसे कुछ लोग अभी क्रिंज बना के चले जाते हैं आगे, दे आर डूइंग बट दे विल रिग्रेट इट एट सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ठीक है. अभी जैसे वही है ना कि मतलब दे कांट सस्टेन इट लॉन्ग टर्म तक, इवन दो इट्स क्रिंज वगैरह इन्फॉर्मेटिव कुछ भी हो. इट्स नॉट सस्टेनेबल अगर तुम बहुत ज़्यादा उसको ओवर डिलीवर कर रहे हो या फिर ओवर शेयर कर रहे हो उन लोगों तक. सस्टेनेबल नहीं रहने वाला. तो ऐसा क्या है कि मतलब जो स्टार्ट कर रहा है ना अभी, वो सस्टेन भी कर पाए, लॉन्ग टर्म का भी सोच पाए, एंड उसके साथ साथ चलता भी रहे. ऐसा क्या कर सकते हैं जो भी, जैसे आप क्या बोलते हो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है So I think, see, I will not say anything specific in this because, again, there are different ways to reach the same goal. But if a person is starting out and they want to make content, is I will say कि just start with whatever you have, and keep figuring things out on the way. Don't wait to get to the perfect thing and perfect thing. I started with my phone, with my whatever I have now. I'm shooting with camera. है. Okay, where I want to, because I know what like community कह रहा हूँ, quality कैसे upgrade करनी है. ठीक है. So I knew that कि like मैं अभी start करूंगा. I'll see how it works out. I'll upgrade the quality and I keep upgrading the quality. So that's what, like, start with what you have is what the best advice I can give you. करना चाहिए ना, अभी तो कंटेंट बना सकते हैं, एवरीवन हैज़ अ ऑप्शन. फ़ोन है हाथ में, माइक की भी ज़रूरत नहीं, लाइटनिंग की कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी तो. इवन इफ़ यू कम अप विद रैंडम एस वीडियो, सबवे सफ़र चल रहा है नीचे एंड यू स्पीक शिट, इट विल गो I वायरल. mean, that's what you're about to go for it. I mean, that's what I'm saying. It's very subjective, and people have different goals to reach from the same place. And if that's you, then go for it. I support that. Go for it. Now, right now you are in directing part of your life. You shoot videos, you direct the people around you, and this is what your industry looks like. Where do you think Mm. कहाँ पे जाके इसका वो है, क्या इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है? Where do you think? क्योंकि अगर I want to more into ad films. हम्म. Keep refining my skills, and I would get into ad films. I want to write, direct, produce the ad films. Currently, I'm saying like I want to make the ads that I want to see. Right now, I'm not seeing that. ठीक है, like मुझे थोड़ा और अच्छे बेटर क्वालिटी के एड्स देखने हैं, एक ऐड एंड कैसा आई वांट होना टू मेक चाहिए? एक ऐड कैसा होना चाहिए? best for me. The example I can give you is like the good era of advertising is those Fevicol ads. पुराने वाले होते थे, right? Even if you like go on YouTube and search, like, so that's the sort of like वो Fevicol के ads, वो like good concept ads, bro. Right now it's just like ये है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ ये करने. It's the same fucking radio tone. ठीक है, I get it. It's working great, amazing. And I'm seeing some good stuff. I'm not gonna lie. Obviously, I'm seeing some good stuff, some creative stuff going on. But yeah, I want to see a lot more because I think I am a student of marketing. I am a student of sales, advertising, and all that. So that's why I want to delve more into advertising because I've written a lot of ads. Made a lot of ads, run a lot of them. So that's why it works out. तो जो पुराने ऐड थे, राइट, Mm, कुछ लाइक कुछ पुरानी मूवीज बहुत अच्छी चलती थी, अभी भी रेलेवेंट लगती है, लाइक थ्री इडियट्स हो गई, या फिर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अभी ये 2016 से सारी जो भी पहले की मूवीज थी, दे यूज्ड mm, टू बी लाइक सुपर रिलेटेबल. बट अभी वैसा कुछ नहीं. नाउ डेज लाइक ऐड भी सिर्फ बेचने में लगे, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग द स्टोरी बिहाइंड द लाइक ब्रांड वगैरह mm, वगैरह. क्योंकि बेचना mm, सबको अभी जल्दी चाहिए, वही चीज़ है. तो mm, अभी के अगर लाइक फॉर एग्जांपल एड, नॉट जस्ट एड, एनी वीडियो जो अभी कोई बना रहा है उसको रेलेवेंट रखने के लिए, एंड लाइक मेक श्योर कि वो आगे भी रेलेवेंट ले कर सके कुछ टाइम तक,
और अभी भी रह सके और अभी ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट भी कर पाए, क्या स्टोरी के थ्रू जाना चाहिए लोगों को, लाइक हाँ I think हाँ। a good story is relevant throughout. Okay, like that you cannot say. A good story that has all the right beats is will always be relevant. वो कभी नहीं हो सकती. उसके कुछ पार्ट्स आउटडेटेड हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं एज सोसाइटी गोज बाय, बट अ गुड स्टोरी विल नेवर चेंज. इट विल बी लाइक दैट. ठीक है, हम्म उसको कर. आई थिंक व्हाट मोस्ट पीपल, so there is a thing, there is a difference between creating something which stays relevant, ठीक है, and being relevant. हम्म When you create something that like you want कि like ये बाकी लोग देखें, bro, ये जवानी है दीवानी, if I have to go that way, and जिंदगी नाल मिलेगी दोबारा, it's still very relevant. ठीक है bro, it's coming of age, तमाशा is still very relevant, right? But when I talk about ki staying relevant as a person, then that's you have your Rakhi Sawant, and that's what you end up becoming. Rakhi Sawant ban jate when you have to keep relevant. That's the difference. गुड एग्जांपल ब्रो। ओके। तो सही साथ अच्छी क्लिप कटेगी इसकी. राकेश सावंत एज लाइक बीइंग रेलेवेंट टू द पीपल। ओके। हम्म. अगर मैं ना एक एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट बिल्डिंग इनकम सोर्सेज, क्योंकि हम्म. बहुत बहुत आई हैव रियलाइज्ड कि बिकमिंग अ मिलियनर बिलियनर जो भी सपना करोड़पति जो भी है, एक इनकम सोर्स से तो पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इट। I'm patient. बट हाँ, क्योंकि उसको I can't दूसरे, speak a lot of this because again, I cannot. मैं अभी नहीं हूँ. जब मैं बिलियनर बनूंगा तो मैं बता दूंगा. इसमें पहले नहीं नहीं, बता रहा मैं वैसे नहीं पूछ रहा, बट हूँ. हैविंग वन इनकम सोर्स एंड हैविंग मल्टीपल इनकम सोर्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर फॉर एग्जांपल पहला इनकम सोर्स जो है गेट स्टक इन समहाउ, कैश फ्लोज का प्रॉब्लम हो गया, मान लो अगर महीना भर नहीं चला, 2 महीना में नहीं चला, हम्म. फॉर एग्जांपल अभी यू आर फोकसिंग ऑन योर बिजनेस बट यू हैव अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अदर देन दैट यू हैव योर सोशल इनकम्स अगर वगैरह वगैरह, अगर मान लो अगर जैसे रनिंग लाइक यू क्रिएटेड डिजिटल प्रोडक्ट, तो अगर इट दैट इज लाइक स्टिल मेकिंग यू सेल्स वगैरह, तो यू आर गेटिंग सोर्स मल्टीपल इनकम सोर्सेज अलग अलग जगह से, बट यू कैन स्टे रेलेवेंट ऑन वन प्लेस, है ना, क्योंकि हैविंग मल्टीपल डोर्स ओपन इज लाइक प्रॉब्लम आने पे यू कैन चूज कि कौन से में अभी हम्म. फोकस कर सकते हैं, है ना। हम्म. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या बेस्ट वे है मल्टीपल सोर्स इनकम बनाने का, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? So I think for the easiest for people who are job goers is like that's how I did it, right? कि मैं I had a job, but मैं side में freelancing करता रहता था. I used to do ads. I used to whatever make things. I used to write for people website लिख दी whatever. So that's how I started कि एक job है, एक side में चल रहा है. That's the easiest way. उसके बाद अगर if you want to expand that further, you have your own personal brand. You do collaborations there. You do digital products का release करते हो. तुम्हारे पास community है and all that. So that's where multiple sources of income. But yeah, like I think most people are very scattered in a way कि like जितनी ज्यादा sources of income बना लो पर कि एक को पहले बना के फिगर आउट कर लो, उसके बाद then move to the next thing. Okay, when that is sorted, because हम्म obviously confused problem आ सकती है, I get that, that's why you need to have the second one, but yeah, पहले एक good get to a good place job wise, or if you're not that good of a place and you cannot change job wise, then maybe then कुछ freelance कर रहे हो side में, right? That's how most people start, and that's the better way to go about it. आप अगर जैसे आपने तो चलो फ्रीलांसिंग वगैरह करके यहाँ तक यू हैव डेवलप द स्किल्स अभी तो, ठीक है, बट अगर कोई पर्सन सिर्फ जॉब पे रिलायड है कि हाँ मेरा जॉब बढ़िया है, आई एम फीलिंग सिक्योर वगैरह वगैरह, क्या एडवाइस है उसके लिए? Bro, that I advice I won't give. I'll tell you कि like for one thing it can go at any time. ठीक है? Then you are, if you're doing the things and you don't have specific knowledge, then you can, and if your employer can train someone else to do your job for you, then you are replaceable and then you can be booted at any time. So specific knowledge is what makes you non-replaceable, which is where your specific चीजें तुम कैसे करते हो, ये तुम्हारे processes क्या है, तुम management कितना अच्छे से करते हो, and that makes you very hard to replace person. And that's what I try to be in my personal life as well, and my professional life as well. I try to be a person who you cannot replace, right? कि मैं जिस तरीके से चीजें करता हूँ, my systems only I know, and I do that through a specific way, and then that's why people keep, like, that's why you get people coming to you again and again, because they like how you work, they like your specific knowledge. ठीक है, तो for people who are in those jobs, I will say be replaceable.
or at least strive for being irreplaceable. इरिप्लेसेबल होना तो लाइक आई फील वेरी इंपॉर्टेंट, Hmm. बिकॉज यू नो कि अगर एक गलती हुई नहीं, यू विल बी किक्ड आउट। इफ यू आर जस्ट, अगर Yeah. नए भी हो या फिर यू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, 6-7 महीने ही अगर कुछ कर रहे हो, ठीक है, एंड Hmm. समवन कम्स इन, भले उसने 6-7 महीने नहीं किया, ही हैज अदर वेज, अदर सिस्टम टू डू इट, एंड समवन लाइक्स इट Hmm. कि नहीं ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है या फिर काम कर रहा है, तो डजेंट मैटर 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 5 का, यू विल बी रिप्लेस्ड। फिर मैं भी हटा दूंगा ब्रो उस बंदे को, तो फिर तो राइट, मैं 6 महीने वाले को रख लूंगा मुझे, बिकॉज दैट्स हाउ लाइक कैपिटलिज्म आल्सो वर्क्स, राइट, एंड यू आर लिविंग इन दैट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड मेक सेंस ब्रो, लाइक तुम्हें अपनी कंपनी लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम एक्सपेंडिचर और फास्टर टाइम, ऑब्वियसली तुम उस बंदे को जाओगे। That's what. ओके, आई थिंक हो गए 4:30, मेरे पास इतने क्वेश्चन थे फिलहाल तो।